Friends, we are here with our fourth chapter, that is gender, religion and caste. And today we will discuss the fourth part of this chapter. So friend, in this video we will discuss on caste and politics, caste inequalities, changes in caste system in India, caste in politics and politics in caste. So friend, let's start with caste and politics. My dear friend, as we all know that like gender and religion, caste division is special to India. Friend, all the society have some kind of social inequality and some form of division of labor. My dear friend, so let's start with the meaning of caste. Friend, a caste system is a class structure that is determined by birth. और फ्रेंड्स अगर हम जनरल तरीके में बात करें तो जनरली किसी सोसाइटी में या कुछ सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि इफ योर पेरेंट्स आर पुअर देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी पुअर टू. Friend, basically when we talk about caste in our country, then the caste has been divided into Dalit, Shudra, Vaishya, Kshatriya and Brahmins. On the basis of the occupation, we can see that Dalit are supposed to do the lower work, जबकि शूद्र मैनुअल जॉब्स करते हैं. वैश्य जो होते हैं वो बेसिकली ट्रेड एंड बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि क्षत्रिय आर known for their power, so they are basically involved in the job related with the military and war. जबकि ब्राह्मण जो कि अपने कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर माने जाते हैं, they are occupationally related with religious intellectual activities. Now friends, let's move ahead and we will continue our discussion with caste inequalities. फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में ही इस बात की चर्चा कर ली है कि इंडिया में जेंडर एंड रिलीजन की तरह ही कास्ट डिवीजन भी होता है. और फ्रेंड, सभी सोसाइटी में कुछ न कुछ कास्ट में इनइक्वालिटीज देखी जाती हैं. सो फ्रेंड, नाउ लेट कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद कास्ट इनइक्वालिटीज. My dear friend, in India system or in Indian system, hereditary occupational division was sanctioned by ritual. It means Indian system में जो occupation का जो division होता है वो rituals या पुराने तरीके से जो चलते आ रहा है उसी के basis पे होता है. It means that member of same caste group will marry within their caste group only. Now friends, let's move ahead and continue our discussion with caste inequalities. My dear friend, caste system was based on exclusion of and discrimination against the outcast group, and they were subjected to inhuman practice of untouchability. It means इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो इनइक्वालिटीज बेसिस पे डिवाइडेड था और इसमें इनह्यूमन प्रैक्टिस जैसे कि अनटचेबिलिटी भी होते हैं, जिसमें हायर कास्ट जो होते हैं वो लोअर कास्ट से टच में नहीं आना चाहते, सच एज अ ब्राह्मण विल नेवर टच अ दलित. नाउ लेट्स मूव अहेड and now continue our discussion on caste inequalities. My dear friend, ये जो untouchability है उसके लिए political leader and social reformers such as ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर and others, इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी का या सोसाइटी में एक ऐसा environment create किया in which the people should not be differentiated on the basis of caste, या
ऐसी सोसाइटी का इन्होंने फॉर्मेशन किया जिसमें कास्ट इनइक्वालिटीज एब्सेंट हो या कास्ट इनइक्वालिटीज नहीं देखी गई हो। Now friends, let's move ahead and now we will talk about changes in caste system in India. My dear friend, अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की तो इंडिया में जो पहले से कास्ट सिस्टम चलती आई हैं उनमें बहुत हद तक चेंजेस देखी गई है और इसका मेनली दो रीजन हो सकता है। द वेरी फर्स्ट, ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स, जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में चर्चा कर लिए, एंड द सेकेंड रीजन कुड बी ड्यू टू द socio-economic changes. Now friends, let's move ahead and we will continue our discussion with changes in caste system in India. My dear friend, हमारे जो कास्ट सिस्टम है उसके हायरार्की में भी काफी ब्रेकेज देखी गई है और इसके पीछे these all reasons could be there. The very first is economic development. Economic development basically mean the improvement in income of a person or a society. जब किसी person या society की income पहले से बेहतर होती है तो it affect their lifestyle and pattern of living, and finally it affect or it bring positivity in thought process of an individual. The second reason could be urbanization. It means जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं तो वो जो रूरल एरिया में जो पहले के कल्चर बिलीफ में जीते आए हैं उसको छोड़ के वो अर्बन एरिया की नई सोच को अपनाते हैं, and because of this also we can see the breakage in caste hierarchy. The third is growth of literacy, or you can say increase in literacy level in people. No doubt ये पहले से ही कहा गया है कि शिक्षा के कारण या एजुकेशन के कारण लोगों के रहन सहन में या अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क पड़ता है। So my dear friend, with due to the increase of literacy level, the thought process of people have also increased, which has lead to the breakage in caste hierarchy in India. And the next is occupational mobility. Friend, occupational mobility means shift in occupation. It means, take an example, कि अगर कोई व्यक्ति पहले जूता बनाने या मोची के काम में इन्वॉल्व था, बट ये जरूरी नहीं है कि उसका बेटा भी इसी काम में इन्वॉल्व हो, because of growth of literacy, urbanization and exposure, उसका बेटा is free to choose any other occupation also, and this lead to the breakage in caste hierarchy. And the next is weak landlord position. It means पहले क्या होता था रूरल एरिया में कि a person was there who was the leader of that village, और सभी जो farmers या उससे जो poor people होते थे they were dependent financially on him, और वो उन लोगों को एक तरह से अपने कंट्रोल में रहता था। So जब वो कंट्रोल टूटा तो कास्ट हायरार्की में भी ब्रेकेज आई। Now friends, let's move ahead and now we will continue our discussion with changes in caste system in India. My dear friend, the Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies to reverse the injustice of caste system. It means हमारे इंडिया की जो संविधान है, it do not favor or it do not promote any kind of discrimination on the basis of caste in societies, and इसके अलावा बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिसका मेन मोटो था to bring injustice or to reverse the condition of injustice in the caste system.
Now friend, let's move ahead and now we will discuss on caste in politics. My dear friend, caste can take various forms in politics such as when parties choose candidate in elections, they keep in mind that the caste composition of the electorate and nominate candidate from the different caste so as to muster necessary support for winning election. इट मीन्स कि जब भी कोई पार्टीज अपनी कैंडिडेट चूज करता है इलेक्शन में तो वो उस कैंडिडेट के कास्ट को ध्यान में रखता है एंड दे डू दिस टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. नाउ let's move ahead and continue our discussion with caste in politics. So friend, the next form of caste in politics is when government are formed, political parties usually take care about the representatives of different caste and tribe to find place in it. It means कि जब भी कोई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल स्टैंडर्ड को या स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो डिफरेंट कास्ट से रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करते हैं या इलेक्ट करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद कास्ट इन पॉलिटिक्स. एंड नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स is during election, political parties and candidates make appeal to the caste sentiment to muster support. Some political parties are known to favor some caste and are seen as their representative. This is the very common phenomena which is seen in our India nowadays, that political parties जो हैं and political parties के जो candidate हैं वो कास्ट को सेंटिमेंट्स की तरह यूज करते हैं. वो कास्ट से अपील करते हैं कि दे शुड वोट टू देयर कास्ट ओनली. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड एंड नाउ वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद कास्ट इन पॉलिटिक्स. एंड नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ one-to-one vote compel political leader to gear up for the task of mobilizing and securing political support. My dear friend, it also brought a new consciousness among the low caste people. Now friend, let's move ahead. Now we will continue our discussion on caste in politics, and now we will talk about the Indian Constitution is not caste biased. So friend, how we can say this? We can say this on the basis of the statement that no parliamentary constitution in the country has clear majority of a single caste. It means हमारे पार्लियामेंट में या हमारे कंट्री में किसी एक सिंगल कास्ट को मेजॉरिटी या फेवरिज्म नहीं दिया गया है. So every candidate and party need to win the confidence of more than one caste and community if they really want to win the election. Now friends, let's move ahead and we will continue our discussion with caste and politics. Friend, we are discussing that the Indian Constitution is not caste biased. The second reason or the second statement which proves that the Indian Constitution is not a caste biased is no party wins the vote of all the voter of a caste or community. Caste as a vote bank of one party usually means that large proportion of voters from that caste vote for the party. It means that India में अगर कोई पार्टी ये समझ ले कि पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कम्युनिटी मेरा वोट बैंक है तो ये उसका सिर्फ एक भ्रम है, बिकॉज किसी एक वोट बैंक के बेसिस पे कोई पार्टी इलेक्शन नहीं जीतता है. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद कास्ट इन पॉलिटिक्स. फ्रेंड, we are talking about
the Indian constitution is not caste biased, and to prove this statement, the next reason is many political parties may put up the candidates from the same caste if that caste is believed to be dominant and electorate in the particular constituency. Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. It means कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन में अपने जो कैंडिडेट्स खड़े करते हैं वो बेसिकली अपने कास्ट के हो सकते हैं या दूसरे कास्ट से भी होते हैं. Now friends, let's move ahead. Now we are discussing in caste in politics, and friend, we are talking about the Indian constitution is not caste biased. My dear friend, the ruling party and the sitting MP or MLA frequently lose election in our country. अब इसके पीछे मेन रीजन क्या है? The main reason जो इसके पीछे है वो है कास्ट एंड कम्युनिटीज. बिकॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वो जो है अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज. अगर कास्ट एंड कम्युनिटीज को फ्रोज कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है द चांसेस ऑफ विनिंग फॉर द एमपीज एंड एमएलए विल बी इंक्रीज्ड. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड and now we will discuss about politics in caste. My dear friend, there is politics in caste also because each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. My dear friend, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में हर कास्ट अपने आप में बड़ा बनना चाहता है. और वो बड़ा कैसे बन सकता है या कैसे बनता है? तो जो उसके नेबरिंग कास्ट या सब कास्ट है उनको अपने में मिक्स करके. एंड फ्रेंड, वो ये सिर्फ अपने कास्ट के रिकॉग्निशन को बढ़ाने के लिए तथा अपने कास्ट के सोशल स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद पॉलिटिक्स इन कास्ट. My dear friend, various caste groups enter into a collision with each other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation. It means कि जो अलग अलग कास्ट होते हैं वो आपस में समझौता करते हैं और समझौते के बेसिस पे वो आपस में बंटवारा करते हैं. Now friends, let's move ahead and we will continue our discussion with politics in caste. My dear friend, new kind of caste group have come up in the political arena such as backward caste and forward caste group. Friends, India में normally जो backward caste group है they always feel neglected in themselves. इसलिए time to time वो अपने rights के लिए आवाज उठाते रहते हैं. Now friends, let's move ahead and now we will discuss that what we have learned in this video. So friend, in this video we have learned about caste and politics, caste inequalities, changes in caste system in India, caste in politics and politics in caste. And friend, in next video we will solve practice question. Till then, thank you.